तो भाई दोस्तों May 22 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी आ गया है, उसका डिस्कशन करेंगे हम अपन, ठीक है। तो take a little bit of time because there are a couple of new sums, really interesting ones, and there are a couple of dicey areas which I need to discuss over here, ठीक है। तो without much ado, let's begin very quickly. तो भाई पहला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन जोन से आया है, क्या ये पहले रिपीट हुआ था? नहीं बेटा, ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। Mr. A is holding 1000 shares of face value of rupees 100 each. Messrs ABC Limited, right, of Messrs ABC Limited, he wants to hold these shares for long term and has no intention to sell. On 1st January 2020, Messrs XYZ Limited has made short sales of Messrs ABC Limited shares and approached Mr. A to lend his shares under the stock lending scheme the following terms. यानी मानिए ये है मिस्टर ए, ठीक, ये हो गए हमारे मिस्टर ए, ये हो गया मेसर्स एक्स वाई एंड जी लिमिटेड। अब मिस्टर ए के पास है शेयर्स किसके? एबीसी लिमिटेड के। इनको शॉर्ट मारना है, दे आर thinking that the markets will go down, the share would go down and will make money. So इनके पास shares है नहीं, XYZ Limited does not have shares, so they will borrow shares from Mr. A, sell it in the market and at the end of 3 months, देखिए shares to be borrowed for 3 months, they would purchase again and hand it over to Mr. A. ये स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग की साइकिल है पूरी। Shares to be borrowed for 3 months from 1/1/2020 to 31/3/2020. Lending charges fees rupees 1% to be paid every month at the closing price of the stock quoted in the stock exchange. तो आज 1/1/2020 है, तो 1/2/2020, 1/3/2020 एंड 1/4/2020 पे जो प्राइजेस लागू पड़ेंगे, राइट, या फिर एंड ऑफ द मंथ, यहाँ जैसे दिया हुआ 31, 29 और मैंने फर्स्ट डेट बोली, इन्होंने लास्ट डेट डाली है, कोई खास फर्क नहीं है आइडिया में। तो उस रेट पे 1% करके उस हिसाब से इनटू नंबर ऑफ शेयर्स the amount needs to be paid by Messrs XYZ Limited to Mr. A. ठीक, bank guarantee will be provided as collateral for the value as on 1/1/2020. तो 1/1/2020 पे भाई वैल्यू क्या है? 1000 रुपए, 1000 रुपए इंटू 1000 शेयर कितना हो गया? ₹10 लाख। तो इनको एक बैंक गारंटी निकलवानी पड़ेगी, who Messrs XYZ Limited has to come out with a bank guarantee and hand over that bank guarantee to Mr. A. भाई आप विश्वास रखिए, in case something happens to your shares, right, that if we are not able to give it back, आपको ये बैंक गारंटी दी जाती है 10 लाख रुपीस की। So obviously Mr. A would be assured, right, एक सिक्योरिटी मिल गई उनको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कौन भुगतेगा? XYZ Limited, because they want to do this stunt of taking shares, shorting it in the market, right? So they would be bearing cost of bank guarantee 8% per annum है, तो 8% per annum into 3/12, 2% for the contract time frame, right? तो contract का time frame कितना है? 3 months, तो 2% of 10 lakh which is nothing but 20,000, तो बैंक गारंटी का मेरा हो गया डन। ये खर्चा आएगा Messrs XYZ Limited paid to the bank, right? On 29/2/2020, Messrs ABC Limited share quoted in stock exchange on various dates are as follows. तो ये जो है ये लिखने की जरूरत नहीं थी इनको, because this makes a statement quite lingually incorrect. Okay, on 29/2/2020, Messrs ABC Limited share quoted in stock exchange
on various dates as follows. So Mrs. ABC is limited stock quoted in stock exchange on various dates are as follows. उतना लेकिन ये देने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं, we understand. You are required to find out earning of Mr. A through stock lending scheme in both scenarios. If there is a bearish scenario and there is a bullish scenario, right? यहाँ भी bearish लिखना था, इन्होंने bullish लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो. Now as price increases and decreases, so बहुत सीधा सीधा से हिसाब है कि 1% of closing price, तो ये आ गया 10,200 टोटल बन जाएगा. कैसे? 1020 का आप निकालो 1%, कितना आएगा? 10 रुपी 20 पैसा पर पीस पर शेयर into 1000 shares is nothing but 10,200. So सेकेंड मंथ एंड पे मिलेगा, थर्ड पे मिलेगा 31,100. बेरिश सिनेरियो, हाँ वहां भी मिलेगा पैसा 9,800. द सेम कैलकुलेशन 1,600. ठीक है, तो ये हो गया अर्निंग ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनेरियोस. बैंक गारंटी का 20,000 है, पेड बाय XYZ लिमिटेड टू द बैंक फ्रॉम व्हिच दे आर टेकिंग द गारंटी. Total earnings of Mr. A during 1/1/2020 to 31/3/2020 in both the scenarios. भाई ये क्या बात हो गई, उनको तो होल्ड करना है शेयर को, राइट? तो यहाँ इंस्टीट्यूट का आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप काफी शौक में आ जाओगे. ठीक है, कल मेरे हाथ पेपर आया था, मैं भी थोड़ी देर शौक में था आंसर देखते. What is the profit or loss to Messrs. XYZ by shorting the shares, right, using through stock lending scheme in both scenarios? बड़ा सीधा सा हिसाब है. They took the shares on 1/1/2020. They shorted it. They got 10 lakh rupees, right? Now they will pay to bank guarantee 20,000 rupees, right? तो बुलिश सिनेरियो में, अंडर बोथ सिनेरियोस, तो बुलिश सिनेरियो में 20,000 टुवर्ड्स बैंक गारंटी, 31,100. मैं सारे सम इतने डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी रिपीटेड सम्स हैं, तो जहां जहां नया लग रहा है मैं थोड़ा आपको डिटेल में जा रहा हूं मैं. तो ये एक खर्चा, ये दूसरा खर्चा, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2 अंडर बुलिश सिनेरियो. कॉस्ट 3 क्या आएगा? बिकॉज दे हैव टू बाय बैक द शेयर्स at rates prevailing on 31/3/2020 and hand over shares to Mr. A back, right? तभी तो बैंक गारंटी कैंसिल होगी, राइट? फिर यहाँ देखिए, क्योंकि बैंक गारंटी आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लोगे, बैंक गारंटी खत्म होगी और आपका काम यही था. दिस वाज व्हाट वाज इंटेंडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. So if they shorted 1,000, square it off at 1,050, यानी they have sold 1,000, bought at 1,050, 50 रुपए. $50,000 लॉस इधर हो गया. टोटल लॉस 1,01,100. शाबाश, डन. नाउ यहां क्या, यहाँ भी बैंक गारंटी 20,000 का खर्चा, 28,800 they paid to Mr. A for stock lending borrowing. 940 पे they will square it off, यानी they will buy. So 60 rupees they will gain in 2,000. So 60,000 is an inflow, right? So 48,800 is an outflow, 60 is an inflow. That is how much? 11,200 profit. Done. चलिए, ये हो गया सम सॉल्व. What institute did and
why we are not able to get our head around it is also worthy of noting. $31,10, $28,800 done. Part 1 $31,000 done, no problem. अपना भी वही आंसर. डिविडेंड इनकम पर शेयर पूरा सब मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, मुझे ये कहीं नहीं मिला. एक क्वार्टर का 25 रुपीज डिविडेंड इनकम पर शेयर है. ऑब्वियसली द पर्सन हु इज लेंडिंग द शेयर्स, सो एनी डिविडेंड दैट कम्स अक्रॉस, राइट, हैज टू रीच हिम. मैंने आपको शेयर दे दिए, यू सेल इट इन द मार्केट एंड देयर इज डिविडेंड. Obviously, I'll ask for compensation of that part because that money belongs to me because that is my shares, right? तो डिविडेंड का मुझे पैसा आना चाहिए, एकदम अग्री. लेकिन ये है कहाँ? सम के अंदर कहाँ है? ठीक है, बेसिकली फेस वैल्यू 100 है. If dividend is 100% per annum, then it can be appropriated to 3 months as 25% on face value of 125 rupees. लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं मुझे सब में, राइट? तो यहां जो आंसर बन रहा है वो मेरे समझ के बाहर है. आपको समझ में आया? आपको मिले तो मुझे भी बताना. बाकी तो हमने जो किया था कैलकुलेशन वही रहेगा, राइट? सो 50,000 लॉस, 60,000 गेन, लेंडिंग पे जो स्टॉक लेंडिंग बोरिंग पे खर्चा, बैंक गारंटी एंड 1,01,100, 11,200, राइट? प्रीटी पीसफुल. यहाँ आ जाते हैं. चलिए, ये हो गया हमारा पहला सम. यहाँ 25 रुपए कहां से आए ये जानने वाली बात है. चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लेकिन सम अच्छा था, जो भी बोलो सम अच्छा था, लेकिन ये मेरे ख्याल से कहीं लिखना रह गया इन लोगों से. सो मे बी little bit of correction and the sum is good. Following is the information for the options free bond. Face value of the bond, term of maturity, yield to maturity, market price of the bond and duration. ये तो बहुत ही रेगुलेशन से सम है, राइट? अब पीवी एट 7% क्यों दिया, गॉड ओनली नोस. वो कोई जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, वो ट्रैप करने के लिए हो सकता है, बिकॉज हम लोग को YTM की जरूरत है. वी ओनली रिक्वायर YTM फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट? That is the market price or the supposed market price intrinsic value of the bond, and we have to calculate duration. If there is an increase in yield by 35 basis points, right? 0.35%. What should be the price of the bond? We can use volatility for calculation or we can directly calculate it, right? Volatility से 100% accurate answer नहीं आएगा. We all know that, right? Something like this appeared, yes, in November 2020. It was 7 marker, right? There was a bond given, coupon rate was given, YTMs were given. Calculate the market price of the bond. Duration they asked for. Volatility they asked for. They asked for additional convexity part. Expected market price. There is decrease in YTM by 200 basis points. By duration, that is volatility, basically duration divided by 1 plus right, 1 plus YTM by N. So that gives us modified duration. Modified duration say we want to figuring out the volatility, reverse direction, inverse relationship. It's very sorted. So much easier than the November 2020 sum. This is a diluted version of the same. तो इसमें कोई ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं है. So I won't do the calculation of this sum. नया भी नहीं है कुछ, right? So as we and I've worked and checked all the calculations to my satisfaction. 948.56 मुझे देख लेने दीजिए.
एकदम 948.56 आ रहा है। फिर ड्यूरेशन जो लॉन्गर मेथड हम लोग यूज करते हैं उससे 5.73 years, ये भी बैठा है एकदम करेक्ट आंसर। प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ यील्ड इंक्रीजेस बाय 35 basis points, ये आप खुद निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट PVFs, it's not given in the sum, right? And what do we notice? 930.15 from price of 948.56. सीधी सी बात है that the price of the bond will fall if the interest rate will rise. It's very much visible over here. So there is nothing really exciting about it. ठीक है, 1 plus YTM, right? And हम लोग मान के चलते हैं is 1 because it's only yearly payments that is done. We get the volatility of the bond, the expected market price of the increase. So इतना inverse direction movement होता है, right? The inverse direction movement 17.62, 930.94. So if we notice that if we calculate by the present value method, that is the proper method, we get 930.15. Alternatively, we get 930.94. अलग अलग तरीके से किया हुआ। Obviously हमको पता है that when you use volatility, this works on a linear mechanism. Okay. ये ड्यूरेशन के साथ लिंक करने से हम लोग जो वॉलेटिलिटी निकालते हैं, सो ये आंसर भी लिख सकते हो। मैं तो ज्यादा इसको ही प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेशन को, बट इफ दे हैव सेड यूज वॉलेटिलिटी जैसे नवंबर 2020 में किया गया था, तो यूज वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग। इट वर्क्स ऑन linearity, but actually the movement in the bond value is not linear, right? So downside protection and upside capture जो which we get in convexity again to a certain extent, but this is the most standardized method, the PV method, right? The present value method. यहाँ देखिए थोड़ा सा ही चेंज है आंसर में, लेकिन है something around 70-80 पैसा आंसर में डिफरेंस आ रहा है, right? So if you want to stop the sum over here, you can, right? Very much. So this was pretty standard sum and a diluted version of the November 2020 thing. Now, sum number 3. Mr. A is having 1 lakh shares of K Limited. The beat of the company is 1.4. Mr. B, a financial advisor, has suggested the following portfolio. They've given different shares, different securities, percentage holding, right? Market return, risk-free rate of return, CAPA comes into picture, right? You are required to calculate the following for the present investment and suggest the portfolio. What is the expected return based on CAPM, and also if the market goes up, तो यहाँ CAPM based return पूछा है आपसे, expected return. We have to calculate both for K and the portfolio. ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। सबसे पहले इसका पोर्टफोलियो बीटा आएगा 1.15। ये भाई सारे रफ कैलकुलेशंस है, ये आंसर फेयर है, वो चिंता ना करो, मतलब आंसर करेक्ट है, ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा आ गया था, ये CAPM का कैलकुलेशन पूछा है इन्होंने, तो मार्केट गोज अप बाय 2.5%। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर मार्केट रिमेन्स एट 12% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देन व्हाट विल बी द आंसर, राइट? के का आंसर क्या है, 13.6 होगा, 13.6। पोर्टफोलियो का आएगा 12.06। मार्केट गोज अप बाय 2.5%, राइट? सो लेट्स 17 CAPM आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं है। ए का होगा 17.10, so on and so forth। पोर्टफोलियो का आएगा 14.60। वैसे आपको कैलकुलेट करते जाना है।
Market return in the first case would be 14.5%. Market return goes down then. And third, they've told if market gives negative return of 2.5, RM is completely changed, right? That is, if the returns go down by 14.5% from the current levels, right? तो इसमें अलग अलग सिनेरियो में ऐसे कैलकुलेशन करना है आपको. ठीक है, तो ये हाई बीटा है, के स्टॉक है, जो बाकी पोर्टफोलियो है वो लो बीटा है कंपैरेटिवली. So under strong bull market conditions, obviously K is going to perform better. लेकिन जैसे bear market scenario आ जाता है तो it starts performing worse, right? यहाँ low beta है, that's why it's not falling really hard. So if the probability of the market giving negative return is more, please advise Mr. A whether to continue his holding of Messrs K Limited, एकदम नहीं, or to buy the portfolio. He should buy the portfolio if we are expecting negative returns. That portfolio is pretty much solid in a volatile state. ये मैंने numbers लिखवाए थे current conditions के. If the probability of market giving negative return is more, it is advisable A to buy the portfolio suggested by Mr. B. ऐसा कुछ था. Exactly मैं ऐसा नहीं कहूँगा, right? Calculate the beta of the portfolio, determine the portfolio return आया था, right? Then इन्होंने थोड़ा और मसाला मिर्च ऐड किया, और अगर RM आगे बढ़ा तो क्या, नीचे उतरा तो क्या, नेगेटिव गया तो क्या. So ये 2011 का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, राइट? दैट इज बीइंग गिवन इन द आरटीपी. लेकिन बहुत बढ़िया, उतना भी नहीं है कि जैसे कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, Mayuri is interested to construct a portfolio of securities X and Y. She has collected the following information: 19% expected return from X and Y, 23% risk denoted by standard deviation, 14 and 18%. Mayuri has 5 portfolio options X and Y as follows: 50%. ये है ना, बहुत लेंथी बना दिया इन लोगों ने. कितने कॉम्बिनेशन? 5 कॉम्बिनेशंस, right? Suppose if coefficient of correlation R between X and Y is 0.16, and there is decent amount of risk reduction you can expect because it's closing towards the zero part, and if it's negative, nothing better than that for the purpose of risk reduction. Lekin 0.16 is also pretty low. So you are required to calculate expected return under different portfolios options, risk factor associated with these portfolio options. यानी आपको portfolio SD निकालना है, which portfolio is best from the risk perspective and the return perspective. अगर आपको याद हो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला जो SD निकालने का था, वो अप्लाई कर देना, बहुत सिंपल है, राइट? दैट इज SD of 1 into SD of 1 square into weight of 1 square plus 2 into R into SD of 1 into SD of 2 into weight of 1 into weight of 2. ठीक है. $13.388. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और SD निकाल लिया अपन ने,
रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद दीज पोर्टफोलियोज 1 2 दोनों के आंसर बता दिए. विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क एंड लोएस्ट रिस्क पोर्टफोलियो कौन सा है? रिस्क कॉम्बिनेशन 4. विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द रिटर्न पर्सपेक्टिव. रिटर्न पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो सबसे बढ़िया जा रहा है पोर्टफोलियो 3, राइट. और भी थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स कर सकते थे. इफ दे वुड हैव आस्क्ड दैट व्हिच वन शुड बी सिलेक्टेड, वी शुड हैव brought in coefficient of variation into being, right, that is hd by return to get the best answer. लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है और अपन को भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है. तो म्यूचुअल फंड के सम की तरफ आते हुए, 1st April an open-ended scheme of mutual fund had 400 lakh units outstanding with net asset value of ₹19. ठीक है, इसका आंसर मैंने बताया आपको, यहाँ दिखा देते हैं आपको आंसर, वही होना चाहिए होपफुली. ठीक है, चेक किया हुआ है मैंने. ठीक है, पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो 3 सबसे अच्छा है, अपन ने बात की थी अभी. 4 फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव. ठीक है, इस लाइन से पूछा गया था पहले भी क्वेश्चन 2008 में, अगर आप नोटिस करो. मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन सिक्योरिटीज. आपको बी और डी का दिया गया था, राइट. और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पूछे थे इन लोगों ने. ऑल्सो इंडिकेट द पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ सीओवी निकालने की बात हुई थी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट. आई सपोज दैट इज सॉर्टेड. 2008 का समय प्रीटी सिमिलर लाइंस, राइट. सारे कॉम्बिनेशन पूछे थे आपसे, तो यही है. कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है. देख लीजिए एक बार फिर से ये वाला 2008 वाला सम. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ 0.15 है, अपने सम में 0.16 है. they are required to calculate the portfolio return using the following. तो इसमें 4 combinations हैं. 100% in B only, 100% in D only is no workout at all. So we had to work out only these two. So इसमें यहाँ थोड़ी मेहनत थी. यहाँ देखो तो all 5 combinations, right, require a workout. तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया. Done. Now coming to mutual fund. तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि भाई which attempt this similar question has come. ये हमारे मटेरियल से ही सीधा सीधा मैंने स्निप किया हुआ है. देखो हमारे मटेरियल में इट इज ये जो क्वेश्चन नंबर था ना, ये हमारे मटेरियल के हैं. सो you can directly see the attempt and everything. So it becomes really easy for you to follow it up. Now mutual fund sum की तरफ आते हैं. On 1st April an open-ended scheme of mutual fund of 400 lakh units outstanding with net asset value of ₹19. At the end of April they issued 5 lakh units at opening NAV plus 2% load adjusted for dividend equalization. DEF वाला sum है ये. At the end of May 4 lakh units were repurchased at the opening NAV less 2% exit load adjusted for dividend equalization. At the end of June 60% of its available income was distributed. ऐसा कुछ आया था. पहले वहां चले जाते हैं, एकदम आया था बेटा. ये देखो नवंबर 2015 डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड वाला सम फिर से मेरे ख्याल से रिसेंट में भी रिपीट हुआ है, शायद नवंबर 20 और Jan 21. On 1st April open-ended scheme 300 lakh units, right? It issued 6 lakh units at opening NAV plus 2% load adjusted for dividend equalization. At the end same, सब कुछ सेम है बेटा, right? ये सम पे कोई ज्यादा डिस्कशन, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. You have to know it well in order to solve it. But as it has already been there, so I won't spend a lot of time because ये पढ़ाने जाएंगे तो पूरा DEF से शुरू करना पड़ेगा. Now मैंने और इन लोगों ने थोड़ा डेसिमल राउंडिंग ऑफ अलग किया है. सो आवर आंसर इज डिफरिंग एट द 3rd and the 4th decimals.
income available for distribution approximately, issue price at end of April, repurchase or NAV per unit at end of June. तो भैया आ गया हमारा NAV as on 30th June. थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा इस सम में, प्लीज रेफर दैट ओल्ड सम. $146 8138. चलिए ये भी नंबर जम गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है. खाली इसमें कैलकुलेशन में नोट ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूं भाई, जब भी आप ये बनाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन की तरफ खास ध्यान दें. पेड ऑन रीपर्चेज, कलेक्टेड ऑन इशू, ये दो चीजों पे, राइट. एंड दैट विल नॉट डायरेक्टली फीचर anywhere in this calculation, it will come indirectly by means of fresh units issued. So DEF gets incorporated in this as well as when units are repurchased. ठीक है, इसमें कुछ फ्रेश नहीं था इस सम के अंदर what they gave, लेकिन सम बहुत प्यारा है, very good, no doubt about it. Derivatives analysis and valuation, यानी अपना डेरिवेटिव का सम है. ये पे ऑफ वाला है, इतनी बार रिपीट हुआ है, चलिए क्या तो बोलूं मैं. Mr. P established the following spread on Coastal Corporation stock. Purchase 1 3-month call option with premium of 6.5 and exercise price of 110. Purchase 3-month put option with a premium of 10 and exercise price of 90. Right, आपको मेरे चेहरे पे स्माइल नजर आ रही होगी. कारण ये है क्योंकि मैं ये करता हूं काफी मार्केट्स के अंदर, उसीलिए. क्यों वो भी बता रहा हूं. When you go for out of the money, क्योंकि अगर आप देखोगे तो it's currently selling at 100, तो 110 का strike for the purpose of call is out of the money, right? Because the spot is lesser than the strike. And from the put perspective, at a 90 strike, the current market price of 100 is again out of the money, right? क्योंकि the spot is greater than the strike, in the money आने के लिए उसको नीचे आना है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते होते हैं. तो मुझे ऐसी छूट रही थी कि देखो ये बंदा मेरी तरह ट्राई कर रहा है, तो एक होता ना फीलिंग ऑफ बीइंग इन द सेम आइडियोलॉजी, राइट. लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, एंड यू हैव टू स्क्वायर ऑफ दीज पोजीशंस वेरी अर्ली इफ यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ ड्रास्टिक मूवमेंट. ठीक है, तो ये टिपिकल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हो गई, और वो उसमें भी आउट ऑफ द मनी यूज किया है तो कॉस्ट कम लगता है, राइट. सो टिपिकल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप, स्टैप, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, राइट. बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, लिस्ट गोज ऑन, राइट. तो स्ट्राइक सेम नहीं यूज की, इसलिए मैं इसको स्ट्रैंगल बोल रहा हूं. Determine the profit loss if the price of Coastal Corporation stock is this much. Assume the option size is 1000 shares. तो ये आ गया मेरा 6,500, यहाँ आ गया 10,000, राइट. If it remains at 100, यानी दोनों एक्सपायर हो गए and you are buyer of the option, तो आपका लॉस हो गया 16,500. Falls at 70 after 3 months, यानी पुट एक्टिवेट हो जाएगा 20 रुपीज, यानी 20,000 वहां से जनरेट होंगे, नेट गेन आ जाएगा आपका 3,500. 138 चला गया तो कॉल एक्टिवेट हो जाएगा 28,000 माइनस 16,500, राइट. तो गेन कितना आ जाएगा, 28 और 16,500 में अंतर कितना है भाई, 11,500. सम खत्म. ऐसे सम आया था, एकदम आते हैं ऐसे सम. तो establish the following spread on Delta Corporation stock, 30 rupees, exercise price 550, purchase of 3-month put option 450. Delta Corporation stock is currently at 500, right. Now determine profit loss of the price,
May 8, 11, 18 and sums on similar lines have come so many times. तो वही क्या आता है, लॉस 16,500 पूरा मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, आपको सॉल्व ऐसे ढंग से करना है. 3,500 गेन, net gain 11,500 क्लोज. नेक्स्ट चलिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये मेरा फेवरेट सम्स में से है, बहुत प्यारा सम है. बिकॉज व्हाई आई लाइक दिस सम वो भी मैं बताऊंगा आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अवेलेबल बीएससी कितना है 25,000, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दैट वी आर होल्डिंग 50,50,000, आरएफ 9%, डिविडेंड यील्ड 6%, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5. We assume that the future contract of BSE index with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio for over next 3 months. Right? 4 month का इंस्ट्रूमेंट 3 मंथ के लिए यूज किया जाएगा. One future contract is delivery of 50 times of index, so that is basically PPF 25,250 आएगा. Right? It is nothing but spot into राइट. आर माइनस डी कितना हो जाएगा 3%, 1 प्लस कर देंगे. राइट, और 3% टी से एडजस्ट हो जाएगा. राइट, 4 मंथ्स का है, दैट इज 4 बार 12, 1 बार 3. दिस विल बिकम 1.01 into S of 25,000, 25,250. राइट, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये रहा. गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन इफ द इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 22,500. इन्होंने शब्द यूज किया है इंडेक्स बेटा, करेक्ट, इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं. राइट, so if the index turns out to be 22,500, the futures would be different obviously, because there is another 1 month to expiry after 3 months, yani another 1 month to go, so we have to calculate PPF at that point as well, another 1 month. So after 3 months, stand over there and apply the same formula, right? Nine minus 6, that's 3%. Another 1 month to go, that's it, right? Into 1 bar 12. 22,556.25, 22,556. Convergence principle would not be applicable. It would be trading slightly over the indices value, that is 56 rupees and 25 paisa, because there is another 1 month to go for expiry, right? ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका गेन्स हो जाएगा. And obviously how many lots you have taken for the purpose of hedging, you have to calculate that as well. That would be 50 lakh 50,000. एकदम रफ में जा रहा हूं. एक लॉट साइज क्या है 12,62,500. बीटा टाइम्स एडजस्टमेंट, because the nifty is moving at a slower rate than the portfolio, so we need to bulk up more nifty, right, or the indices, sensex, whatever you call it. सिक्स लॉट्स, पुराने सब में भी 6 लॉट्स आते हैं, राइट. ये दोनों का डिफरेंस निकालो, इंटू 6 लॉट्स इंटू 50 वुड बी योर आंसर. निकाल ही देता हूँ. 25,250 माइनस 22,556.25 into 6 into 50, 8,08,125 would be the answer. ऐसा बालक आया था सम, एकदम आया था, काफी डिटो टाइप सम था ये. 8 मार्क्स नंबर 2007. यहाँ 50,50,000 है हमारे केस में. 9%, 6%, 1.5 सेम, राइट. 4 months used for next 3 months, 50 times price of future, short position gains. इंस्टीट्यूट का क्या आंसर आया बेटा?
8,08,125 6 contracts per contract size. Same, nothing to worry. ठीक है.